Narendra Modi's visit to the temple town of Ayodhya yesterday was marked with a strong pitch for Vikas, Virasat and social justice. The Prime Minister flagged off projects worth over 15,000 crores in the holy city. He linked our rich cultural heritage with development, saying only the safeguarding of our heritage will be able to propel India's development. Let's listen in to the Prime Minister's resounding message from Ram Ki Nagri. आज यहां प्रगति का उत्सव है तो कुछ दिन बाद यहां परंपरा का उत्सव भी होगा। आज यहां विकास की भव्यता दिख रही है तो कुछ दिनों बाद यहां विरासत की भव्यता और दिव्यता दिखने वाली है। यही तो भारत है। दुनिया में कोई भी देश हो, अगर उसे विकास की नई ऊंचाई पर पहुंचना है तो उसे अपनी विरासत को संभालना ही होगा। इसलिए आज का भारत पुरातन और नूतन दोनों को आत्मसात करते हुए आगे बढ़ रहा है। 23 तारीख के बाद अपनी सुविधा के अनुसार वो अयोध्या आए। प्रभु राम जी पधार रहे हैं तो हम भी कुछ दिन इंतजार करें। 550 साल इंतजार किया है, कुछ दिन और इंतजार कीजिए। और इसलिए सुरक्षा की लिहाज से, व्यवस्था के लिहाज से मेरी आप सबसे बार-बार प्रार्थना है। Well, the thrust wasn't just on Vikas and Virasat, but the Prime Minister also sent out a strong social justice message as he visited the house of the 10 croreth beneficiary of the Ujjwala Yojana, the scheme under which poor households are provided with free gas connections. The family of Meera, whose house Prime Minister Modi visited in the narrow streets of Ayodhya, was overwhelmed and said that they consider the Prime Minister as their God. Listen in to the conversation that they had with the Prime Minister. In fact, one of the most symbolic images from yesterday was of a man, Iqbal Ansari. Remember, he once stood on the other side of the divide. But as the Prime Minister visited Ayodhya, the main litigant in the Babri case showered petals on the Prime Minister, sending a powerful message to those who claim that Ram Mandir consecration is being turned into a political event. Speaking to Times Now, Iqbal Ansari said that it was his duty to welcome the Prime Minister to Ayodhya. He further credited the Prime Minister for bringing a wave of development in Ayodhya. अयोध्यावासी इतने खुश हैं माननीय प्रधानमंत्री जी से कि हम भी अयोध्यावासी हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। हमने भी उनका स्वागत किया और फूल वर्षा किया। हमारे साथ जो है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे लोग थे। विकास के नाम पे अयोध्या बड़ी अधूरी रही। आज एयरपोर्ट भी है, रेलवे स्टेशन भी है और सड़कें भी हैं और बहुत से जो है काम अयोध्या में विकास के नाम पे हुए हैं। आज सरकार भाजपा की है, जो है विकास हो रहा है, लोगों को रोजगार भी मिलेगा। जो है अयोध्या में विकास के नाम पे बहुत काम हो चुके हैं। कोर्ट ने फैसला कर दिया, पूरे देश के मुसलमानों ने उसका सम्मान किया। मुसलमानों की तरफ से न कोई धरना है, न कोई प्रदर्शन है, न कोई मुकदमा है। आज मंदिर का काम पूरा हो चुका है। बहुत से लोग हैं, अपनी अपनी बात लोग जो है रखते रहते हैं। So while images of the Babri litigant showering rose petals on the Prime Minister came as a living testimony to the Prime Minister's Sabka Saath push, some unfortunately continue to play politics over it and brand the much-anticipated Mandir consecration event as BJP's event. Many in the opposition ranks have expressed hesitancy in attending the concentration ceremony on the 22nd of January, and the top Congress leaders who claim to be devout Ram followers haven't made their stand clear yet. The CPM, on the other hand, has decided to turn down the invitation. And when SP President Akhilesh Yadav was asked if he will attend the ceremony if invited, he had this tongue-in-cheek remark. Listen in. आप लोग भी समझदार लोग हैं और बहुत जागरूक हैं। हमारी परंपरा में या हमारे पूर्वज यही कहते हैं कि जब भगवान बुलाते हैं तो सब जाते हैं, और कब किसको भगवान बुला लें ये किसको पता है।
अगर ये बात गलत हो तो बताओ। और ये लोग जाएंगे जिनको भगवान बुलाएंगे, और जब जिसका समय आएगा वो जाएगा। आज रेल के किराए बढ़ा दिए गए। Well, there are other leaders of Team India who have reiterated that Ram Mandir event has been turned into a stage for politics. Sample a few more reactions. अभी इतना ही बाकी है कि 22 तारीख को बीजेपी की तरफ से ऐलान होगा कि हम प्रभु श्री राम को ही चुनाव में खड़े कर रहे हैं। हाँ, इतना ऐलान होना बाकी है कि हमारे कैंडिडेट अयोध्या से या कहां से प्रभु श्री राम है। अब यही कहना बाकी है। इतना पॉलिटिक्स चल रहा है राम जी के नाम पर। माझ्याकडे निमंत्रण अजून आलेलं नाही, पण एक सांगतो तुम्हाला, अयोध्येमध्ये राम मंदिर होणं ही आनंदाचीच गोष्ट आहे आणि त्याच्यासाठी शिवसेनेने सुद्धा खूप मोठा लढा संघर्ष हा केलेला आहे। कोणी का करत असलं तरी राम मंदिर तिकडे होतंय याचा मला नक्की आनंदच आहे। अयोध्येत मी कधी जाईन, कधी राम मंदिराचं रामलल्लाचं दर्शन घेईन, तूर्त मला एवढंच वाटतं की ह्याची एक पॉलिटिकल इव्हेंट होऊ नये हीच माझी अपेक्षा आहे। Ramlala or Ayodhya whole affair is not the personal property of BJP and RSS, who are there to invite. And opposition will decide its own, and anytime they can go and worship. Now, the BJP has shot back at the India Alliance leaders, saying it isn't the BJP government but they who do politics in the name of Ram. Drawing a contrast, the BJP reminded the opposition parties of their Mandir trips on the eve of elections and asserted that for the BJP, Astha in Ram was a way of life. So every now and then, for the vote bank politics, they were talking of Ram, but using the name of Ram, but nobody actually was living up to that Sankalp se Siddhi ka kaam which Prime Minister Modi has accomplished. They have to keep manufacturing arguments one way or the other. But the people, as I said the other day also, I said the voter has moved on, whereas the politician is still trying to play the tricks of the last election. It is they who start going to the temples on the eve of election. It is they who start doing all these juggleries. For us, it's a way of life. Now, as the entire nation is eagerly waiting for the historic Ram Mandir consecration ceremony on the 22nd